Good morning, dear students. Today we will continue our topic articles. As you know, yesterday I told you about indefinite article, the use of a as well as an. A is used in a word which starts with a consonant. An is used with a word which starts with the vowel A, E, I, O, U. That was indefinite article. Now, definite article is today's topic. The is known as definite article. ये जो वर्ड th द है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. फर्क बहुत ज्यादा है इसमें. अगर मैं कहता हूं दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, आर्टिकल इज यूज्ड हियर, इट इज इनडेफिनेट आर्टिकल. ये एक नॉर्मल एक किताब है. अगर मैं कहता हूं ये कुरान है, दिस इज द होली बुक कुरान या द कुरान. बुक इज अ नॉर्मल वर्ड, कुरान वहां पर इसको एक डेफिनेट एक शेप बनाता है, डेफिनेट आर्टिकल बनाता है, एक खास चीज बनाता है. जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, ये एक नॉर्मल बिल्डिंग है. द ताजमहल, वो नॉर्मल बिल्डिंग. रेड फोर्ट, द व्हाइट हाउस ऑफ अमेरिका, द पार्लियामेंट, वो नॉर्मल बिल्डिंग्स नहीं है. वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं द. द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल. एग्जाम्पल देखिए, द ताजमहल. अगर मैं लिखता अ बिल्डिंग, दैट वाज अ इंडेफिनिट आर्टिकल. नाउ आई हैव रिटन द ताजमहल, इट बिकम्स डेफिनेट आर्टिकल. द कुरान, अगर मैं बोलता अ बुक, दैट्स अ इंडेफिनिट आर्टिकल. नाउ आई एम सेइंग द कुरान, इट बिकम्स डेफिनेट आर्टिकल. अगर मैं बोलता अ ट्री, दैट इज इंडेफिनिट आर्टिकल. अगर मैं बोलूंगा द चिनार ट्री, ट्री तो सारे हैं लेकिन चिनार ट्री एक ही होता है, वहां ये बन जाता है डेफिनेट आर्टिकल. नाउ हैव अ लुक on some examples through which you will better understand the concept of definite article. The Taj Mahal is one of the wonders of the world. Look here, I have written the Taj Mahal. Taj Mahal is the noun, okay? The word the has been used here because it is not an ordinary building, it is a Taj Mahal. ये एक दुनिया के एक वंडर्स में, अजूबे में से एक है. ओके, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एफेल टावर, ताजमहल, दीज आर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. सेकंड, द कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स. सो कुरान इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, इट्स अ ग्रेट बुक, a holy book, not a common book, a specialized book. That is why I have written here the definite article. Okay. Third, the chinar tree is found in Kashmir. आप लोगों ने कश्मीर में चिनार ट्री देखा होगा. Okay. So the article the has been used because chinar tree is not an ordinary tree. It's a specialized tree which is only found in Kashmir. That is why I have written the chinar tree is found in Kashmir. Note down, simple, a book. What makes it definite article? Quran. I will write the Quran. Book is a common book. Quran is not a common, it is a specialized book. कोई खास किताब है ये. Tree, it's a normal tree. Indefinite article may be used here. But chinar tree makes this tree very specialized. इसको खास बनाता है. Indefinite article will be used here, the chinar tree. Gita, it is not an ordinary book. Just like a Quran, it is a Gita. It may be Bible. It may be Guru Granth Sahib. Similarly, in case of tree, it may be chinar tree, which makes it definite. Mango tree, which makes it definite. Apple tree, which makes it definite. Okay. Now let's take the example of buildings. A normal building. What makes
the normal building definite. Taj Mahal may be the example. Red Fort may be the example. White House of America may be the example. Indian Parliament may be the example. Okay. So a small recapitulation about articles is that articles are determinants which determine the noun, which are used before a noun. It has two important categories. First is indefinite article, in which the use of a and an. Second is definite article, which makes something very specialized. Okay, indefinite articles are not specialized, but definite articles are specialized. I think that is sufficient for today. Thanks.